हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ विकी और मेरे साथ आज मॉडर्न लव मुंबई सीजन 1 के डायरेक्टर और स्टार कास्ट इस वक्त मौजूद है। सच अ प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। Thank Thank you. you. It's Thank you so much. तो सबसे पहले तो सीधा मैं सेंटर ऑफ द चेयर पे जो बैठे हैं उनके पास जाना चाहूंगा बिकॉज शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। 80 से लेके आज तक आई थिंक यू हैव मेंटेन दैट लुक। आई मस्ट आस्क यू द सीक्रेट ऑफ इट। I don't think there is any other secret other than genetics. क्योंकि मैंने तो पूरी कोशिश की है बर्बाद करने की लेकिन हुआ नहीं है। थोड़ा मोटापा हो गया है, बाकी सब चल ही रहा है। सो नवनीत जी, टीवी बड़े पर्दे पर वापस टीवी, तो ये जर्नी थोड़ा अगर समरी में अगर आपको कहना होता है इसके बारे में तो क्या कहेंगे नाउ दैट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? OTT मेरे लिए बिल्कुल नया है. It's a wonderful new world which has opened out for actors and filmmakers. लेकिन टेलीविज़न और फिल्म तो पहले से ही था. इनफैक्ट फिल्म्स पहले की, हमें राय प्यार की मैंने पहले की थी और तारा उसके बाद हुआ था. तो वो तो एक साथ में ही जर्नी चल रही, बस थिएटर नहीं किया है, वो बड़ा दुख होता है मुझे. लेकिन OTT सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है. एक्टर मेरा ख्याल पिछले 20-25 सालों से हम वेट कर रहे थे कि कुछ रेवोल्यूशन आएगी, कुछ नयापन आएगा, जो अब जाके आ गया है. Absolutely, and it is so amazing to watch, कि सारे नॉस्टैल्जिक फीलिंग आता है जब भी आप देखते हो कि बचपन से जब आप बड़े होते जा रहे हैं एंड यू वॉच those actors coming back and delivering those powerful performances. It's a household name, Navneet ji. You are a household name. Moving on to Alankrita, बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स आपके साथ है इस एपिसोड में माय ब्यूटीफुल रिंकल्स. हाउ इजी वाज द प्रोसेस और वाज इट रियली टफ? Well, I think it was a lot of fun, and I'm really honored. I've worked with really fantastic actors on My Beautiful Wrinkles, and the lead protagonist is played by Sarika, or Sarika. Really, is a very, very experienced actor, and she really was very, very easy to work with. And then, of course, I've worked with Navneet, and it was really wonderful. And we had there was a group of friends actually. There's a track of a group of friends, and there's Yamini, there's Micky, there's Navneet, and Sarika. तो उनका एक gang है, girl gang type का है. And I think those scenes were the most fun scenes that we shot. And when they used to come together in front of the screen. Everyone was so excited looking at all four of them. The whole crew used to forget कि ये shooting चल रही है. सबको लगता था कि they're actually watching, just watching a bunch of friends who've been really good friends for very long. So it was a lot of fun. I also Danish Razvi is another actor who's one of the protagonists in the film. He's new, but he was also very, very good. So yeah, it's been a wonderful experience, and I think I learned a lot, especially from Sarika. Absolutely amazing. In fact, modern love, अगर ये शब्द को describe करना हो तो कैसे describe करें? Well, modern love, I think for me, modern love means that love that is fluid. It is found in unexpected places. Conventional, it's not where you think you will find it, and also it is not necessarily happily ever after. It is a love that वो कुछ moments के लिए भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि वो it means कि if you fall in love, something dramatic will happen. Sometimes it's just about a few shared moments. And really that it has no barriers, of age or gender or anything. So I think that is, in a way, that is love that has always been there. But when we recognize all kinds of love, in a sense, we call it modern love. इनफैक्ट किसी भी स्टारकास्ट को क्या आपने जबरदस्ती बिठा के मॉडर्न लव यूएस दिखाया, कहा कि ये ऐसा है वैसा है, या उन्हें दिखाया कि इस तरह का काम आपको करना है? Was that the case? Actually, to be honest, Modern Love, the original US version, is so popular that I never had to tell anybody to watch it. Everyone had already seen it. So, no, I never did that. I didn't feel the need either, and of course, mostly people had seen it.
क्योंकि ये जो कहानियाँ हैं जो हम अभी मॉडर्न लव मुंबई में कर रहे हैं वो सेम कहानियाँ नहीं हैं, वो अलग सेट, इट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ स्टोरीज। तो वो मतलब वो कुछ नया लोगों को देखने में मिलेगा, बिकॉज इट्स नॉट कि वो सेम जो स्टोरीज ऑलरेडी बन चुकी हैं वो उन्हीं का हम री इंटरप्रिटेशन करें। ये ब्रांड न्यू सेट ऑफ स्टोरीज हैं बेस्ड ऑन द न्यूयॉर्क टाइम्स कॉलम। सो या, सो आई थिंक द ऑडियंस हैज समथिंग इंटरेस्टिंग एंड न्यू टू लुक फॉरवर्ड टू। नवनीत जी, आप मुंबई में बहुत समय गुजारे हैं, आपने फिल्में में, टीवी में, सब जगह काम किया आपने। अगर कोई मुंबई में रोमांटिक स्पॉट की अगर बात करे तो कौन सा वो जगह आता है? नेरेबन पॉइंट ऑफ कोर्स, लॉट ऑफ पीपल, बट लॉट ऑफ प्लेसेस आई एम श्योर। कोई रोमांटिक स्पॉट आपको याद आता है मुंबई में? आई थिंक मुंबई में प्रॉब्लम ये है कि रोमांटिक स्पॉट्स ही नहीं है। तो मतलब थोड़ा बदनाम है पत्थरों के पीछे, समुद्र के पास। वाकई में ना कुछ गार्डन्स हैं ना कुछ, कहाँ मिलते हैं बेचारे डेटिंग वाले रेस्टोरेंट्स में। तो मुझे तो आज तक कोई रोमांटिक जगह दिखी नहीं है। I find Bandra the most romantic place in Bombay. Yeah, because that- it's got such beautiful lanes. Yes, and- of course, of No, course. even the beaches. उस तरह तो मुंबई से ही हमको प्यार है, तो we like it very much. लेकिन रोमांटिक प्लेस थोड़ी कम है। वैसे आजकल तो सारा रोमांस आई थिंक सोशल मीडिया पे हो जाता है, टिंडर पे हो जाता है। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे दैट सोशल मीडिया किस तरह से हमें हमारी लाइफ अफेक्ट कर रहा है, स्पेशली आवर रिलेशनशिप्स एज वेल? मुझे तो लगता है कि काफ़ी मतलब खतरनाक हो गया है इश्क की दुनिया, बिकॉज़ ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं सारी। बहुत सारी चीज़ों को फैसिलिटेट कर देती हैं जो नहीं करनी चाहिए। थैंक गॉड हमारी रोमांस की उम्र निकल गई है। That's not true. कम से कम मेरी। तो आई डोंट नो, मुझे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है आज की दुनिया में कनेक्शंस बनाना, बिकॉज एवरीथिंग इज सो changeable, there are options and options and options. तो No, बहुत not only that, I think everything is very easy. easy, yes. You want to send somebody flowers. हमारे ज़माने में we had to go to maybe pluck some flowers, and it was more romantic. आजकल you just order and that person will get whatever bouquet or whatever. So I think हमारा ज़माना was very good. दिस ब्रिंग्स मी टू द एवोल्यूशन ऑफ लव वाला क्वेश्चन, जहाँ पे या एक टाइम पे फूल मिलते थे और वो दिखाया जाता था कि फूल टकरा रहे हैं और प्यार हो गया। और आज क्या हो रहा है कि सेम सेक्स मैरिजेस, वो तरह का एवोल्यूशन हो गया है। सो हाउ ओके आर यू विद दिस बीइंग पिक्चराइज्ड, बीइंग शोन, बीइंग नॉर्मलाइज्ड ऑन बिग स्क्रीन्स? I think you should answer that. Sure. अलंकृता, जैसे बधाई दो के बारे में आपने काफी तारीफ भी की थी। I think that all kinds of stories should be told, and I think cinema stories and whatever. When by cinema I mean whether the stories come on, come on like as a series or as an anthology, as a short film, whatever. I think stories play a very important part in in human life for people around the world, and I think that people need to see stories that feel real. That they can connect to and people feel represented. So I feel stories are a very powerful, a very powerful source, a very powerful medium. I don't think people can live without stories. So I think that it's important to have all kinds of stories in books, in songs, in poems, in paintings, and speaking about all different kinds of human experiences, different kinds of characters. So I think that diversity of experience and that diversity of worlds, that diversity of characters is very, very, important. And I think a storyteller's job is to, is to tell all kinds of stories in all different kinds of ways. So that's what I believe in. I really believe in a multitude of stories with a multitude of perspectives and a multitude of ways of telling, those stories as well. एंड माई ब्यूटिफुल रिंकल्स, ये नाम ऐसा है कि लोग रिंकल्स से दूर भागते हैं, आपने गले लगाया है। सो ये एपिसोड का टाइटल से लेके सारी चीज़ें विद द स्टार कास्ट एंड एवरीथिंग, अगर थोड़ा बहुत अगर आप बता सके अबाउट दिस एपिसोड माई ब्यूटिफुल रिंकल्स। Sure. So My Beautiful Wrinkles basically it's a story
which is actually it's a coming of age story of a middle-aged woman who's living on her own in Bombay. Her name is Dilbar, and that's played by Sarika. And it is kind of like when we enter the film, we see that ऊपर ऊपर से लगता है that everything is okay in her life, सब कुछ ठीक है, she's fine. She also thinks everything is fine, but actually she's carrying a big weight, inside of her, and things are not actually okay. And then she has a chance encounter with this young boy called Kunal, that's played by Danish Razvi. And that interaction with him makes her think about her life differently, and makes her look at her own choices and all of that very, very differently, and something shifts inside her. So that's roughly what like the film is about. And My Beautiful Wrinkles, because it's about embracing the idea of living a full life and living a joyful life no matter what your age, and also not being like, it's not like when you're like in your 50s or 60s you have to suddenly act like you're in your 20s, but you have to embrace that, okay, I have lived a full life but I'm still living, and to kind of embrace that. So it's not like you have to shy away from the wrinkles, but like you said so beautifully, but embrace the wrinkles. And it's about embracing your own life and finding new meaning in your own life. Awesome, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मिकी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो रिंकल से सब भागते हैं, एम्ब्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है ओल्ड एज को। एक बोलते हैं ना कि gracefully old होना also, and it's again very liberating, it's very liberating to accept. प्यार की कोई सीमा भी नहीं होती, लेकिन बहुत लोग छुपाना भी चाहते हैं रिंकल्स को, तो कैसे छुपाए, उसका कोई तरीका बताओ। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा, ना मैंने अपने सफ़ेद बाल छुपाए हैं, तो रिंकल तो नहीं, आई डोंट थिंक छुपाना चाहिए. वन शुड जस्ट, इट्स वेरी लिबरेटिंग टू एक्सेप्ट योर एज एंड जस्ट एक्सेप्ट हु यू आर. आई फाइंड के it's you look better when you are comfortable with yourself, and मुझे तो नहीं छुपाने अपने wrinkles. I definitely embrace them, and I think the title is very beautiful. In fact, this title is so liberating. It's, if you understand exactly what they mean, my beautiful wrinkles. लोग भागते हैं, and here we just accept them, accept ourselves the way we are. जब हम देखते हैं सिनेमा में, वेब सीरीज में, स्टोरीज देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में अप्लाई करना उतना आसान नहीं होता. टू मेनी कमिटमेंट्स, टू मेनी बैगेजेस. वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट. जब अलंकृता ने कहा दैट जॉयफुल रहना चाहिए, अपने प्यार को आप सीमित ना रखें. फॉर एग्जाम्पल, सारिका जी ओल्ड है और यंगर लड़के से प्यार हो जाता है. रियल लाइफ में इट इज नॉट ऑल दैट इजी. व्हाट डू यू थिंक? Speaking from experience, no, I really wouldn't know. But I think there are people, there are friends, I have friends who are in relationships like this, and anything that is acceptable to the society within limits. If you're not hurting somebody, I don't see why not. I think it's perfectly acceptable to be in a relationship at any age. If you're not harming somebody or hurting someone, and you are okay with it. And you can only be okay with it, I think, when you have a certain mindset, when you are happy with yourself, what this movie is about, I think, just, which you can make out even from the titles. You simply accept yourself, accept your emotions, explore your emotions. And I think it's perfectly acceptable. Amazing. Navneet ji, thoda off topic hai, but what do you think about Ranveer Singh as an actor? I love him. Absolutely adore him. Who doesn't? Who doesn't? पहली तो वही बात है. लेकिन वो मतलब इंसान को प्यार कर रहे हो कि एक्टर को, आपको खुद नहीं समझ में आता है. He is like a bomb. क्या एनर्जी है उस बंदे में यार. मैं रिसेंटली उनके साथ शूट कर रही थी और उन्होंने मुझे तारा की तरह पहचाना और मतलब he was so nice. और मेरे मेकअप वैन में आ गए मुझे बताने कि वो कितने बड़े फ़ैन हैं. 6-7 बार तो मुझे गले लगाया, कुछ 20 बार मुझे किस किया. तो मतलब मैं तो क्लाउड 9 पे थी उस दिन. तो इतनी इजीली प्यार देता है ना वो लड़का, मतलब रब ने उसको कुछ अद्भुत आत्मा दी है. आई सेड आई अडोर हिम. And yes, I mean, बहुत सारे सवाल है मन में, but एक क्विक रैपिड फायर
अगर इजाजत हो तो आपके साथ खेलना चाहूंगा, जहाँ पे मैं यस्टर ईयर्स के पर्सनालिटीज के नाम लूंगा और आप बताना उनके मॉडर्न वर्जन्स कौन होंगे। अच्छा, मॉडर्न चार्ली चैपलिन। Modern Charlie Chaplin. Arshad Varsi. okay, yeah, yeah. We are sticking with the modern love. मॉडर्न धर्मेंद्र। Abhay Deol, I think, his son. Modern Dharmendra. I think these people are. Yeah, Akshay Kumar also. Akshay Kumar. Very difficult. Very difficult. धर्म जी एक ही Yeah, है. yeah, this is a very difficult. I think Yeah, they yeah, are yeah. so iconic. You can't think of anybody. You know. मॉडर्न तारा। Impossible. मैं भी सोच रही हूँ कौन. Modern Tara. I can't think of anyone. मैं छोटे बालों वाली ही कोई सोच रही हूँ, याद नहीं आ रहा है. मॉडर्न माइकल जैक्सन। वो तो बहुत है, I think. Tiger Shroff. Yeah. Prabhu Deva. Prabhudeva. Too many good dancers. मॉडर्न हिटलर। Putin. बस लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे मिकी, आपको आई एम श्योर बहुत अच्छा लगा होगा, व्हाट पीपल कैन एक्सपेक्ट जिन्होंने देखा है मॉडर्न लव यूएस वर्जन और अब मॉडर्न लव मुंबई सीजन 1, और आपका किरदार थोड़ा सा अगर आप बता सकें। Actually, I am one of the friends in that friend group, and when we are together, it was like the shooting that we did. It never felt like work, you know. It was like so. The story is basically Sarika's, which Alankrita will be able to tell you, but this has been adapted to, I think, the Indian context. And love is such an emotion. I think it is the same everywhere. Maybe the language changes, but the emotion remains the same. And my character is one of the girls, ladies. And we all get together and gossip and just be ourselves in the scenes that I have done. And they are very beautiful scenes, as Alankrita said. And it was a lot of fun shooting them. And I think the rest of the movie, maybe Alankrita could tell you exactly what is the storyline. अलंकृता से जानने से पहले नवनीत जी से जानना चाहेंगे आपका किरदार और किस तरह का प्यार आपको मिला या करते हुए आप चाहते कि लोग आपको दे आफ्टर वाचिंग मॉडर्न लव सीजन 1, मॉडर्न लव मुंबई। मेरे लिए भी सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है. इट वाज वेरी इजी गोइंग. बिल्कुल लगा नहीं कि शूटिंग कर रहे हैं. बिल्कुल नहीं लगा. इनका स्वभाव बहुत मीठा है और वहाँ पर माहौल भी इस तरह का था कि फिर लकीली हम लोग मिले. हम सारिका के दोस्त सब बने हुए और मिलते ही सब में बहुत अच्छी केमिस्ट्री इंस्टेंटली हो गई. तो in fact, when it was done, I told her that's it, and Alankrita said, "Yeah, that's it." It was so easy. It never felt like कुछ shootings बड़ी भारी लगती है. ये बहुत easy going. Yeah, this was a lot of fun. It was great fun. और सारिका की मैं बहुत फैन थी, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला. It was a privilege. It was amazing. Yes. And Alankrita, last words about Modern Love Mumbai. Well, Modern Love Mumbai is, like I said, it's based on, it's not a language adaptation. It is like those stories haven't actually been made before. It's based on the New York Times Modern Love columns, but new columns which haven't been adapted before. And it's there's 6 stories, and each story is very, very different. Each story is set in it's like the age group is different, the kind of characters are different, and there are different kinds of themes being explored in the different stories. So there's many shades of love, and yeah, it's been wonderful. I think I'm also very, very excited that this because I think like though all of us have made individual films, I think the beauty of it is that those 6 films have come together to explore 6 different sides of love. So so yeah, that's very interesting. And also the city is a big backdrop in the show, so one really sees Bombay from very different lenses, and alag galiyan, alag tarike ke ka mahol. So there's a lot of diversity, there's a lot of color, and it's a very, very, I'm very proud of the show, and I feel very fortunate that that I got to be a part of it. And yeah, I'm really excited. I'm waiting for people to watch it.
It's out on May Superb. 13th. यस मई 13 को रिलीज हो रही है मॉडर्न लव मुंबई सीजन 1. विश यू ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छा लगा मिकी जी, नवनीत जी और अलंकृता. सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू ऑल. विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड स्पेशल लव टू नवनीत जी. Thank you so much. Thank you. That's so sweet.